वेल हर इंटरव्यू में हर कैंडिडेट को एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है कि वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि वो कैंडिडेट जिसको हायर किया जाना है अभी, वो कंपनी के लिए 5 साल में किस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा, उसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है और उसके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। लेकिन अक्सर कैंडिडेट्स इसका कोई इंप्रेसिव रिप्लाई नहीं दे पाते और सामने वाले को डिसअपॉइंट करते हैं। वेल जानते हैं इसका एक सबसे स्मार्ट रिप्लाई इस नेक्स्ट पार्ट में। We'll consider about your salary expectations, but I would like to know one more thing about you. If we just hire you, where do you want to see yourself after 5 years? Well, sir, I am excited about the opportunity of being as account manager at this company. Sir, for first 1 to 2 years, I would like to continue developing my professional skills. And once I have established credibility and thorough understanding of protocols of this company, then in next 3 to 4 years or in next 2 to 3 years, I would like to see my role turning into planning and policy making position so that I can make strategies for the team as well as company. Thank you, sir.